Namaskar Bandhu, you are most welcome in Telecom Guru. Right now, we are once again, we have reached at site. The name of the site is Sankhwa 01, right? That means BUSKW01. Now, once again, we have reached here, and today we are going to discuss about in Delta how does we do setting, right? Discussion. The main agenda is to how to set the low voltage, how to set the LVD, how to set the uh, all the alarms in delta system, right? So now we are going to discuss about this. We are going to discuss about these things. That means now you are looking here of this board, village Sankhwa, name Sankhwa 01, date of installation 6/5/22, name of USP Bharti Airtel Limited, supported by USOF, right? Once again, some things have installed here. Now finally we are going to discuss about one thing is DG. Yeah, that means diesel generator. Now you are looking here, the DG, it's a 15 kVA, right? So I want to show you the internal part of DG, right? So Mr. Pankaj, go and open the gate of DG, so that people will look at the complete the things of DG, how DG work. This site is completely situated in a remote area, and now you are looking here DG. It's a 15 kVA DG, and the internal part of DG you are showing here, right? You are seeing here. That means it's a exhaust pipe, right, Pankaj? Exhaust pipe. And what is the use of exhaust pipe? Do you know? Yeah, can you explain in Hindi? सर ये जो भी इसके अंदर जो भी गर्म हवा बनता है वो एग्जॉस्ट होके इस होके बिल्कुल बाहर निकल जाता है। इसके अंदर जितने भी जो गर्म जो करता है ना, बनाता है, वो क्या है, इस एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है, ताकि जो इंजन है उसको कूल रख सके, है ना। कूलिंग का भी एक तरीके से ये काम करता है। हालांकि कूलिंग का सबसे बड़ा कार्य जो है वो एग्जॉस्ट फैन करता है ना, कि जितना भी इंटरनल जो एम्बियंस जो है ना, जो हॉटेड एयर है उसको बाहर फेंकता है ना, वो बाहर फेंकता है, जिससे हमारा जो इंजन है वो कूल रहे, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 15 kVA का डीजी है। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? या हैंड प्राइमरी। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड प्राइमरी? डू यू नो? कैन यू एक्सप्लेन हिंदी? जब भी अगर फ्यूल मेरा शॉर्ट हो जाता है तो हम इसको इसके जरिए, हम हैंड प्राइमरी के जरिए, हैंड पंप की तरह इसको हम एयर इसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये जो हैंड प्राइमर आप जो देख रहे हैं, ये हैंड प्राइमर, इसका यूज ये होता है जब हमारा डीजी एयर लेता है। एयर लेने के पश्चात में जब हम डीजी स्टार्ट करने जाते हैं तो डीजी स्टार्ट नहीं हो पाता है, राइट। तो इसके लिए क्या है, इसको हम लोग ऐसे खोलते हैं, है ना, और खोलने के बाद में हम लोग जो है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे प्रेस करते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्रेस करने के बाद में ये जो है आपको